So, the names for the team which would play in the Asia Cup 2023 has been announced, and three big names are back, and they are KL Rahul, Shreyas Iyer, and Bumrah. And India has taken chance with only one rookie, Tilak Verma. There's a lot to discuss about. We'll go over to my friend CS, who is waiting, and he has a lot of ammo on it. CS, first of all, the chance has been given to only one rookie, and that risk factor has been mitigated to a huge, huge extent. So it is only Tilak Verma who gets a chance. Otherwise, it is a set and tried and tested team. But I'll open with an interesting point, which is that, and a point which you've made repeatedly in the past, that whenever someone is coming back from an injury or a layoff or whatever, that person needs to be battle tested somewhere else and not inducted straight into Team India. I mean, this is not getting into an airplane. But KL Rahul, Shreyas Iyer, they were seriously injured and they've been out of action for quite some time, but they are back. That used to be the norm before the most powerful Shahs took over. The Shah dynasty took over Indian cricket. So I remember during Dilip Vengsarkar, Sharad Pawar, any time, that used to be the norm, that you have to play at least one first class game. And one first class game was also not been considered a 1 day game. You have to play at least a 4 day game, 3 day game kind of thing. But now nobody is caring for this kind of condition. And when we talk about these two players, they are not coming back from some fringe injuries, that they got injured and they were out for 1 or 2 matches. They were out for very well, I think, 10, 11 months. And they were in an NCA hospital, National Cricket Academy hospital. I call them that a hospital because more than a practice or more than a training, center, it has become a hospital for all the injured players. They go there, they rehabilitate. They don't play any first-class games, and they are again been inducted into the Indian cricket, and also a parking slot for one of the former players. Initially, there was so many. Ravi Shastri was there. Then Rahul Dravid, before becoming the chief coach, he was the NCA director, and now VVS Lakshman. In order that these people, they don't sulk, so, and they are also being given in crores and quite a big crores. So they hold this that hospital that is under their charge. And let's look at some of the stats of Iyer and Rahul, and let's explain to our viewers why they have been inducted. So the fact remains that both the players, which is KL Rahul and Shreyas Iyer, they have been mainstays in ODIs of late at number 4 and number 5. They are the two vital positions, and India has struggled to fill these two positions since the 2019 World Cup got over. And talking about Rahul, in the 18 matches that he has played at number 5, he has scored 742 runs at an average of 53 and almost striking close to run a ball. And it is an improvement over his career average of 45.13. Similarly, Iyer, who had a serious surgery, he's been groomed for the number 4 spot since the 2019 World Cup. He's been featured 22 times at the position, where he has scored 805 runs at 47.35. CS, I have two pointers for you. One is, when you're talking about, it is quite clear from their stats that they are vital batters at number 4 and number 5. So for a country with such a fabled bench strength, and it is so touted and spoken about, since 2019, my first point is, why couldn't India plug the number 4 and number 5 gap? And two, that when players of this kind are reinducted into the team and who are not match fit at all, and that too catapulted into a very important competition. So how does that player make that mental and physical adjustment? The problem is, mostly that why we haven't got a number 4 player for so long. That is because the selectors or the management, they probably don't, require a permanent number 4. They want to keep this position rocking so that they can have options, they can have experiments in the name of number 4. That I can only see. Otherwise, if you look at all the players, अगर आप पिछले 3-4 साल में देखो, you have been trying openers as number 4.
not number 4 as openers or number 3 as openers. You have lot of wicket keepers, you have lot of openers जिनको आपने ट्राई किया है, फ्रॉम ईशान किशन टू केएल राहुल टू रोहित, और ये सब तो है ही। अब तिलक भी आपके पास आ गए। तिलक इज वेरी, जिस तरह से उन्होंने इम्प्रेस किया इस अपने डेब्यू मैचेस में, इट्स बीन फैंटास्टिक। ही इज इन ना केवल टच जिसे कहते हैं टाइमिंग, बट बिकॉज ही इज ए लेफ्टी, that gives a added advantage to Team India. So now number 4 position, if you are considering Rahul as number 4, then I'm sorry, you are again going back to the drawing board and then discussing all these positions. Yes, Shreyas Iyer is perfectly number 4, or for that matter, any other player. If you try, maybe who knows, Tilak would be tried at number 4, looking at his form, or Ishan Kishan. He also sets up in that position well. But the problem is, अगर आप केएल राहुल को एडजस्ट करना चाहेंगे इन ओपनिंग और नंबर 4 पोजीशन, देन ऑब्वियसली यू हैव टू जगल अ लॉट। और यही एक प्रॉब्लम मुझे ज्यादा दिख रही है। बट ओवरऑल टीम इज क्वाइट बैलेंस। इट्स नॉट दैट द टीम इज नॉट बैलेंस। इफ दीज टू प्लेयर्स आर फिट इनफ to last this Asia Cup is again going to be a T20 game, not the 50 over. So probably that will be their trying time, and then after that in the World Cup they could be inducted into the team. There was another important point, interesting rather, which came from Captain Rohit Sharma during the press conference, yes, and that he spoke about the need for flexibility in the batting lineup, कि कोई कहीं भी जहां भी जिस दिन उनका मन चाहे वो खेलने को तैयार होना चाहिए, पॉइंट 1, और वो खेल सकता है पॉइंट 2 और पॉइंट 3। जो बाहर बैठे लोग समीक्षा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, उनके दिमाग में ये बार बार बात आती है कि अरे नंबर 3 पे जो आता है वो 6 पे आ जा गया है, नंबर 4 पे जो है वो नंबर 3 पे आ गया है। तो उनका जो अपना रैशनल है ना, जस्ट वांट टू रीड आउट हिज कोट। ही सेज you need flexibility, guys who can step up at any position. No one should say I'm good at this position or I'm good at that position. You want guys to be able to bat anywhere, and that's the message conveyed to every individual. Now CS, it is easier said than done. ये क्रिकेट को बर्बाद करने का एक और तरीका है। during the Greg Chappell time, if you remember, he wanted everybody to come out of his comfort level, और उन्होंने बर्बाद कर दिया था। वीरेंद्र सहवाग शॉट मारना भूल गए थे। सौरव गांगुली को तो उन्होंने साथ ही कहा था कि जब उन्होंने ऑनेस्ट ओपिनियन पूछा था, आई डोंट थिंक यू शुड बी इन ए टीम आल्सो। सचिन तेंदुलकर का कॉन्फिडेंस उन्होंने खराब कर दिया था। राहुल द्रविड़ वाज द ओनली वन जो उनकी गेम में खेल रहे थे। इट्स लाइक कैबिनेट ऑफ पॉलिटिकल सर्कल्स, कि वो उनके खेमे में थे तो वो बचे हुए थे और जो कह रहे थे उसको मान रहे थे। अदरवाइज रेस्ट ऑल का उन्होंने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया था। उन्होंने जिस प्लेयर पे जो पैसा लगाया था, जो कहते हैं कि अपना दाव लगाया था, वो तो चल नहीं पाया। उन्होंने कई ऐसे प्लेयर ट्राई किए थे ऊपर। नंबर 3 पे उन्होंने इरफान पठान को भी किया था, इफ यू रिमेंबर। मोहम्मद कैफ को बहुत लंबा टाइम दिया उन्होंने, जेपी यादव को बहुत लंबा टाइम दिया था, बट एनीवे वो कोई नहीं चला, क्योंकि फाइनली इट इज ऑल्सो अबाउट योर क्लास। तो when Rohit Sharma is saying all these things, then he should be looking at his own career. वो एज ए मिडल ऑर्डर आए, उनको ओपनर में सेट किया गया, और उनको अगर इतना लंबा सेट ना करते तो टीम में ना रहते। जिस तरह का उनके उस टाइम की फॉर्म की प्रॉब्लम चल रही थी, टिल 2011 ही वाज नॉट ए रेगुलर प्लेयर। अगर आपको देखें, उसके बाद जब जैसे जैसे टीम में सेट हुए और मुंबई इंडियंस की भी कृपा रही, तो उनका करियर ग्राफ अलग तरह से चला। लेकिन जितने फेलियर्स पे उनको चांस दिया गया, किसी और को नहीं दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट आई ऑलवेज बिलीव ही वाज द मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ हिज एरा। सो नाउ कम्स हिज हर एक प्लेयर को फ्लेक्सिबल कर दीजिए। फ्लेक्सिबल करने का मतलब है T20 में आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड, 20 ओवर है, आपको कहीं भी खिलाइए, कुछ भी कीजिए, ना आपको पिंच हिटर चाहिए ना कुछ चाहिए, कहीं भी खिलाकर चला दीजिए, आई कैन अंडरस्टैंड। बट यू आर गोइंग टू प्ले द 1 डे 50 ओवर 1 डे इन द कमिंग डेज, जिसका टाइम आपका 2 महीने रह गया। तो 2 महीने में अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसका मतलब है कि आपको अपनी फॉर्म जो कि खराब चल रही थी, आपको अपने पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप हर एक चीज में हाँ में हाँ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एनीवे, मतलब कि अजीत आगरकर को मैं भी ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि अभी बहुत जल्दी है उनके लिए कुछ भी कहना। ही इज फ्रॉम ए लॉबी, he has only been a chief selector because he belongs to a lobby। लेकिन अभी मैं उनको अभी भी बिल्कुल कोई कहना नहीं चाहूंगा। अभी वेट करना चाहिए किस तरह से टीम को रीबिल्ड करते हैं। अबे रीबिल्ड में जिस तरह से प्लेयर्स को ला रहे हैं, अगर ये कामयाब हो गया तो उनको कोई उंगली नहीं उठाएगा।
अगर ये खराब रहा उनका और हम एशिया कप में अच्छा ना कर पाए तो मुश्किल होगा उनके लिए भी थोड़े दिन के बाद बात करना। बॉलर्स पे आते हैं तो जहां तक बॉलर्स की बात है, अमंग द फास्ट बॉलर्स जसप्रीत बुमराह इज अंडरस्टैंडेबली बैक बिकॉज टीम इंडिया वाज सीमिंगली desperate for him to be back as the main strike bowler. He's been doing quite okay in Ireland, but again, it's a very short stint before he's catapulted into the 50 over format, so his fitness will be tested. Then Prasidh Krishna has been inducted, and then the settled names of Shami, Siraj, Hardik Pandya, who is in the role of an all-rounder, also as a vice captain, and Shardul Thakur. But CS, the most interesting part is that there is no off spinner in the squad, so there is neither Ashwin or Washi. And again, Rohit Sharma makes some wishy-washy comment on this and says, "Oh, we'll see how it goes." Now, we've discussed Ashwin adequately in the past, and we all know what he brings to the table. And he's a very, very good all-rounder. Washi can also use the long handle. I can't say the same thing about his bowling. But what is your opinion on this combo that Rohit Sharma has a strong fixation for these seamers? Because he said that also in his comment that we'll see. We have to have these seamers in Indian conditions. Do you need so many seamers in these conditions? I mean, again, this is all about your thought process. आप Indian subcontinent में you are going to play in the Asia Cup and then later on the World Cup. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अगर आप ऑफ स्पिनर को नहीं खिला रहे हैं, स्पेशली अगेंस्ट द फॉर्मिडेबल टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और इवन पाकिस्तान हैज सो मेनी लेफ्ट हैंडेड, मुझे समझ नहीं आ रहा आप किस दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं। और इनफैक्ट जितने भी आप पेस बॉलर्स को 5 रेगुलर पेस बॉलर्स को आपने लिया है, 2 उसमें से पूरे तरह से फिट नहीं है। प्रसिद्ध कृष्णा कैसा करेंगे? वो इंजरी से पहले भी हमेशा लगता था इंजर हो जाएंगे। और जो बुमराह का जो कमबैक हुआ है, मैंने बहुत कम देखा है ये जो मैचेस हुए, लेकिन जितना मैं देख पाया, मैंने जब भी उनकी बॉल की स्पीड देखी 132 129, बुमराह कभी भी स्पीड पे बॉल नहीं करते थे। तो वो सभी लोग जो मेरे हिसाब से, वो सभी लोग जो कह रहे हैं कि 100% फिट है, मुझे नहीं लगता। यस, एक होता है आप रिहेबिलिटेशन के बाद आते हैं, थोड़े लूजनर्स फेंकते हैं और थोड़ा सा कोशिश करते हैं आपको दोबारा इंजरी ना हो। और बुमराह के साथ ये प्रॉब्लम है कि जब से फर्स्ट टाइम उनको 10 साल पहले डोमेस्टिक में भी देखा था या आईपीएल में देखा था, तो पहली बॉल देखने के बाद मुझे ये लगा था और सभी क्रिकेट एक्सपर्ट्स को लगा था कि ये किसी भी दिन फट्टड़ हो जाएंगे, कभी भी इंजर्ड हो जाएंगे, उसका लंबा इंजरी ले ऑफ होगा बिकॉज ऑफ इट्स इरेटिक एक्शन। बॉडी का पूरा जो इक्विलिब्रियम है वो कहीं पर मैच नहीं करता। तो अब वो उस इंजरी से वापस आए, अच्छी बॉल कर रहे हैं, कोई बुरा नहीं है, लेकिन उनकी वो स्पीड वापस नहीं आए। अगर उसको हाइड कर रहे हैं, जब भी आएगी तो उनके टूटने का चांसेस ठीक वैसा ही रहेगा जो जहीर खान के लास्ट के 5 साल में था। अगर आपको सीरीज याद हो, जब हम इंग्लैंड गए पहले मैच में, कुछ ओवर के पास वो टूट गए, हम पूरी सीरीज हार गए, बिखर गए। तो बुमराह का इम्पैक्ट वैसा ही टीम इंडिया पे हो सकता है जो जहीर का हुआ करता था, क्योंकि उनके बिना टीम इंडिया अधूरी है। शमी एक आपके रेगुलर बॉलर है, अगर वो रिदम में रहेंगे बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन उनके साथ अगर एक तरफ बुमराह है या एक तरफ शार्दुल ठाकुर है, इस पे बहुत फर्क पड़ता है। शार्दुल वो एडवांटेज नहीं ले पाएंगे, सिराज वो एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। सिराज एक अलग तरह के बॉलर है जो ब्रेक थ्रू देते हैं, लेकिन लंबी रेस का घोड़ा मुझे कभी नहीं लगा। हाँ, टेस्ट मैच में लंबे स्पेल्स कर सकते हैं, लेकिन आपके जो मैंने कहा ना थॉट प्रोसेस क्या है कि आप T20 के लिए तो नहीं खेलने जा रहे हैं। T20 तो एक सिर्फ कदम है, आपको वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है और उसके बाद अपनी टीम को रिबिल्ड करना है। उसमें आपका यहाँ पर अगर अश्विन को इतना कॉन्फिडेंस लूज करवा देंगे कि उनको टीम से बाहर ही रखा जाएगा, उनको वर्ल्ड कप फाइनल भी नहीं खिलाया जाएगा, सॉरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी नहीं, तो उनका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा? अश्विन इज अ वेरी टफ नट, उनसे बात कीजिए, उनमें एक बहुत अच्छे थिंकर है वो क्रिकेट के, लेकिन पॉइंट इज हर एक आदमी का एक पॉइंट होता है जहां तक वो एक प्रेशर को ले सकता है। और जिस तरह आपने कहा कुलदीप यादव, आई एम श्योर ही इज ए गुड बॉलर, लेकिन कुलदीप यादव हर मैच नहीं खेल सकते। कुलदीप यादव की ये एक प्रॉब्लम है, और जिस तरह के चाइनामैन बॉलर है, वो बॉलर कभी भी हर मैच नहीं खेल सकता। उसको आप टीम के अगेंस्ट हर टीम की जो खासियत देखकर या उनके वीक पॉइंट्स देखकर कि कहां पर कुलदीप तंग कर सकते हैं, उनको बीच बीच में मैचेस खिला सकते हैं। अगर आपने उनको लगातार 5 मैच खिला दिए तो आई कैन ओनली अश्योर यू कि आप उनका भी करियर खत्म करेगा और टीम इंडिया की उम्मीदें भी खत्म करेगा। CS, on this point, since you're analyzing Kuldeep Yadav, let's talk about the spinners. So India has left out Leggy Chahal.
and they have Kuldeep Yadav in place. So he's the wrist spinner and more of a Chinaman bowler, as you're saying, who has limited efficacy. Then you have two finger spinning all rounders in Ravindra Jadeja and Akshar Patel. Akshar off late has been a bit lackluster. So is India missing a trick somewhere? Akshar is more or less like Ravi Shastri, more of a batsman, less of a bowler. Though again, his batting is also not that equivalent to Ravi Shastri. लेकिन उनकी बॉलिंग में दम है ही नहीं. आपको मानना पड़ेगा अक्षर could be a good container in the T20, बट अक्षर पटेल को लेकर के वो ठीक है, वो आजकल अहमदाबाद से वो शाह डायनेस्टीज के एरिया से आते हैं तो उनका रूल है. लेकिन जितने अगर आप देखें जितने भी स्पिनर है सबसे वीक लिंक हुआ है एज ए स्पिनर, प्योरली एज ए स्पिनर. रविंद्र जडेजा वो तो एक उनका स्टाइल है. देखिए रविंद्र जडेजा से अच्छा आपको स्पिनर नहीं मिल सकता और ऑलराउंडर नहीं मिल सकता उनकी लिमिटेड कैपेबिलिटीज की वजह से. लेकिन रविंद्र जडेजा से आप एक्सपेक्ट करें कि वो बड़े कमाल के ब्रेक थ्रू देंगे या कुछ नहीं. वो एक तेज बॉल करते हैं, उनका एक स्टाइल है, जो कहते हैं ना एक फर्मा सेट होता है, उसमें किसी ने गलती की वो फंस जाएगा. लेकिन रविंद्र जडेजा कैन नॉट बी ए विकेट टेकर अगर बैट्समैन ये सोच के जाए कि मुझे इसको विकेट नहीं देनी है. वेयर एज अश्विन या कुलदीप यादव फॉर दैट मैटर, कुलदीप क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट है, वरना अश्विन आपको खिलाते हैं. अश्विन को आप कितना भी अच्छा खेल लीजिए, आप उनके अगेंस्ट 100 भी कर दीजिए, लेकिन अश्विन जिस टाइम उनको चकाएंगे तो वो एक बैट्समैन हमेशा सरप्राइज जरूर देगा कि ये एक अच्छे बॉलर है. तो इसलिए इन सबको कंपेयर नहीं कर सकते. युजवेंद्र चहल तो मैं यही कहूंगा कि शायद अब उन्होंने अपना पिनेकल देख लिया, उन्होंने एक अपना पीक देख लिया. ही इज ए वेरी टाइट बॉलर और वो अपने गट से इतना खेल गए. कोहली के भी एक अच्छा योगदान रहा, जैसे रैना में धोनी का रहा, कोहली का युजवेंद्र चहल में रहा. तो अब वो कप्तान नहीं है तो शायद इनका भी वक्त ऑलमोस्ट खत्म ही है. लेकिन कुलदीप यादव कैन नॉट बी ए रेगुलर स्पिनर फॉर ऑल द मैचेस. Also, since we are discussing off spinners and the guile and the deception and the strategy and the cunning of Ashwin, also like he gave a very pretty detailed interview of late also on YouTube. He mentioned how he remodeled his action, and he said most players would have given up since he's in his 30s, but still he's being treated in this cavalier fashion in India. But what I want to know from you is that here we have such reservations about Ashwin being played, and Australia blooded a Todd Murphy, a 20-year-old kid who bowled so well against us, of course, in a different format in the Test series, and also someone like Moeen Ali, who constantly has been able to get some of our big guns out, and he troubles them. Arup, you have to also understand there are a lot of left-handed batsmen in the world cricket right now. Look at England team, look at Australia, look at even India. India has been blooding a lot of left-handed batsmen because of natural advantage. So what has happened subsequently in the other teams? Okay, most of the teams are also blooding the off spinners because they also understand left arm spinner or right arm leg spinners will not be that lethal against the left-handed batsman. So it's a combination जो एक दूसरे को जो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट करता है. बट अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आई डोंट नो, क्योंकि डोमेस्टिक अब हम बहुत ज्यादा देखते नहीं, बहुत ज्यादा करते नहीं. आईपीएल ने पूरा क्रिकेट को खत्म कर दिया. जब हम डोमेस्टिक देखा करते थे, बहुत ट्रेवल करते थे ड्यूरिंग दैट टाइम बिफोर आईपीएल, वी यूज्ड टू राइट अबाउट अ लॉट ऑफ अपकमिंग प्लेयर्स कि हरभजन नहीं है तो कौन आएगा, शरणदीप आ रहा है, कोई और आ रहा है. कई ऐसे बॉलर्स आते थे जो जब चेकिंग में हरभजन की प्रॉब्लम आई थी तो कई आपके पास 2-3 ऑप्शंस होती थी. लेकिन आज की डेट में ना तो कोई आईपीएल के अलावा कोई, क्योंकि आईपीएल इज नॉट ए क्रिकेट. आईपीएल के बेस पे तो आप वो कहते हैं ना छक्के मारने वाले ही देख सकते हो. आप बॉलर की क्लास तो जान ही नहीं पाते. आप दिलीप ट्रॉफी को बहुत कम कवर करते हैं, बाकी की ट्रॉफीज का, ईरानी ट्रॉफी की अब कोई महत्व ही नहीं रह गया. तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है कि नाम किसी के फेंकने की, ये नहीं तो अश्विन नहीं तो और 3 बॉलर्स कौन है, ये बताने बड़े मुश्किल हो जाते हैं. जो बॉलर्स आपको दिखते भी आईपीएल हो ये वो, आई डोंट गो बाय दैट लॉजिक कि ये लोग इनको रिप्लेस कर सकते हैं. सो देयर हैज बीन ए प्रॉब्लम एंड देन देयर इज आल्सो ए प्रॉब्लम कि जब सेलेक्टर्स और जितने पहले जोनल सेलेक्टर थे तो अपने जोन को वो प्रेफरेंस देते थे. अब सेलेक्टर्स को पैसा भी करोड़ों में देना शुरू कर दिया. सुप्रीम कोर्ट की जो कई फेल्ड रूलिंग्स हुई उसमें एक ये भी है कि हम तो सोचते थे क्रिकेट के अच्छे के लिए होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन से क्रिकेट और खराब हो गया.
क्योंकि इससे आपने पावर किसी और सेंटर्स में दे दी। अब एक अलग तरीका आ गया, कुछ नॉर्थ ईस्ट की टीमें आ गई, उनके वोट तो बिकने शुरू हो गए। इट्स लाइक ए गवर्नमेंट सिस्टम। तो अब जो सिलेक्टर्स है, जो पहले 3 होने थे फिर 5 ही हो गए, लेकिन जोन के एक भी नहीं होगा, जैसे नॉर्थ से कोई नहीं है तो कहीं वेस्ट से 2 हो जाएंगे। तो इन सिलेक्टर्स का एक अपना स्टाइल हो गया हुआ है, उन्हें मालूम है किस तरह से वोटिंग करनी है, किस तरह से प्लेयर को एक पहले से ही एक बैक करके चलते हैं। तो एक एक डिफरेंट सिस्टम हो गया। मैंने कहा ना, इस पे एक लंबी बहस हो सकती है कि हम प्लेयर्स को अगर हम एक पूल बना दे 40 प्लेयर्स का, कि उन 40 से बाकी के 20 का क्या हो रहा है। वही जो पहले फर्स्ट 18 है 20 है, सिर्फ उनकी रोटेशन होती रहती है, बिकॉज Correct. योर फेलियर टू एड्रेस द डोमेस्टिक सिस्टम। और जिस तरह के आपने वर्ल्ड कप के शेड्यूल देखे हैं, 2 बार शेड्यूल बन चुका है, और दोनों बार शेड्यूल में शेड्यूलिंग इज द इजीएस्ट थिंग। आप जब भी कोई शेड्यूलिंग करना चाहते हैं आरोप, तो आप बैठते हैं, आपके भाई टीम बड़ी प्रोफेशनल टीम है बीसीसीआई, मैं किसी को ये नहीं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन ये शेड्यूल्स बनाते हुए आ रहे हैं सालों से और कभी चेंज नहीं हुआ। लेकिन अब अंडर शाह डायनेस्टी ये शेड्यूलिंग भी चेंज होती है। अब जो दूसरा शेड्यूल दिया है उसमें भी हैदराबाद को प्रॉब्लम है। तो ये एक बेसिक जो चीजें हैं, जो चीजें हम फॉलो करते थे, जो नॉर्म्स फॉलो करते थे, मुझे लगता है वो भी प्रेशर में लोगों ने फॉलो करनी बंद कर दिया है, बिकॉज ऑफ वन पर्सन जिसकी पूरी, जो कहते हैं ना, पूरी वही रूल कर रहे हैं, और उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं है, जस्ट लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Okay, let's come to wicket keepers, and that's again an interesting toss-up. So Ishan Kishan is the chosen one, and Sanju Samson, on whom there was a lot of expectations resting. He has proven himself in different formats. He's considered to be a much better batter than Ishan Kishan, possibly a even superior wicketkeeper. He somehow gets shafted CS in important tournaments. And one thing I will say, despite being a admirer of Sanju Samson, is that um, there seems to be a recurring phenomena that whenever he gets chances, he does not utilizes those chances to the extent possible. मतलब जब आपको मौका मिले, आप चौका मारो, आप अपनी पोजीशन बुक करो, कुछ ना कुछ एक होता रहता है उनके साथ कि वो ये कर नहीं पाते। तो इसके पीछे क्या कारण है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ टीम सपोर्ट, देयर हैज टू बी समथिंग रॉन्ग. The most important factor is lack of support from your team management, and especially your captain. I don't know what is his problem, or in the team, or with the captain, or with the management. But the point is, आप जिस तरह से दूसरे प्लेयर्स को थोड़ा, कहते हैं ना कि जब एक टाइम आता है टीम में, आपको मालूम है ये बॉलर अच्छा नहीं है, उस टाइम पे किसी कोई आउट हुआ भेज दिया, वो रन करता है, या एक मतलब कि आपको बैक करना पड़ता है। संजू सैमसन हैज नेवर गॉट दैट बैकिंग, नंबर वन। यस, दूसरा, आई ऑल्सो एग्री विद यू, ही हैज नेवर प्रूव्ड हिमसेल्फ एट द हाईएस्ट लेवल। शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता हो, शायद टीम में उनको वो कंफर्ट लेवल नहीं मिल रहा है। बट एनीवे, आई ऑल्सो फील वेरी sad about Sanju Samson, because I always thought the way he leads his team, Rajasthan Royals and all that, he was always a captain material. But again, इंडिया में आपको कैप्टन मटेरियल अश्विन भी कहते थे, मैं हूं, तो उनको कैसे ट्रीट किया गया। So that's also not an advantage with him also. And the last point is that the Asia Cup is considered to be like a prelude to the ODI World Cup, which India is hosting in October. Before that, the Aussies will also be here for a limited series. Now, the main point is Agarkar has made it very, very clear that the team for the ODI World Cup will more or less center around these 17 who have been chosen for the Asia Cup, and one shouldn't expect any more surprises. So that more or less shuts the door on any new talent. And second is that the opposition would know how to analyze our team pretty much better than they would have otherwise. That also shows that Ashwin will have no place in World Cup. That's very shocking to me, because you will be playing a lot of matches on the slow pitches, and especially in Chennai or Delhi, Hyderabad. All these are ranked turners, not ranked turners, but yes, turners, you can say. And especially Delhi is like a ranked turner. So that's I'm quite surprised with this kind of statement, but I don't feel the same way. I always believe कि अगर आपकी एशिया कप में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, बिलीव मी, अगरकर हैज नो से इन ऑल दीज थिंग्स, एंड टीम्स कहाँ से आती है, क्या होता है, यू विल बी फोर्स्ड टू इंक्लूड
players from outside that 17 or 18 squad. So I think Ashwin still has a chance on Indian wickets, and I also believe that there could be a moment जो आपको नंबर 4 का जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ना, ये T20 में आप सेट नहीं कर पाते हैं. बिलीव मी, T20 में आपको नंबर 4 नहीं मिलने वाला. नंबर 4 की प्रॉब्लम आपको कंटिन्यूसली वर्ल्ड कप में भी दिखेगी इफ यू कैरी ऑन लाइक दिस. श्रेयस अय्यर अगर सेट हो जाते हैं, अगर वो रन करते हैं, दैट इज द ओनली ऑप्शन जो मुझे लगता है नंबर 4 को सेट कर सकती है. लेकिन आई एम नॉट श्योर हाउ फिट ही इज गोइंग टू बी, हाउ मेंटली ही विल बी प्रिपेयर टू play World Cup under these kind of circumstances. So before we wrap, should we basically say that the team, the group of 17 that has been chosen, this is like a safe bet? It is a very low risk proposition, and except for Tilak Varma, they could not even blood a Rinku Singh. I know these are two very early days, but he was hitting beautifully in Ireland, and above all, like you're saying, he plugs another hole of being a left-hander. So this is a very safe bet by BCCI. Well, Rinku can't be, there at number 4. Rinku is number 6 type batsman. He goes there, bang, bang, or apna karte hue, whatever his talent or whatever his capabilities are. He cannot be there in number 3 or number 4 position. So the point is whether anybody outside this, again, this 17 has most of the players, It's not like that we are missing somebody. It is only about number 4 we are talking, or about 2 bowlers who are coming back from injury, whether they could be adjusted, and then Ashwin, whether he can make a cut into this, 17 से 18 weight team हो जाए. That is the only issue जो मुझे लगता है. अश्विन के बिना इंडिया में वर्ल्ड कप खेलना, it won't be easy for you. Number 1. और number 2, इंडिया की any pitch in India, anywhere, क्योंकि मोहाली में इस बार मैचेस नहीं है. आपने धर्मशाला थोड़ा स्विमिंग ट्रैक है, अदरवाइज या मुंबई को छोड़ दो, आपको हर जगह आपको 2 स्पिनर खिलाने होंगे. अगर आप 4 स्पिनर के साथ या 3 पेसर्स और एक ऑलराउंडर के साथ लेकर के और फिर स्पिनर को सिर्फ एक को खिलाइए, मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम का बैलेंस ठीक से बन पाएगा. बिकॉज हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा 2 बैटर आपके पास ऑलरेडी हैं जो आपको नंबर 7 तक बैटिंग की जो डेप्थ देते हैं. एंड देन विकेट कीपर बैट्समैन आपके पास इतने सॉलिड हैं, कोई भी खेल ले. संजू सैमसन जो रिजर्व में वो भी खेलेगा, ही बी बेटर बैट्समैन देन मोस्ट ऑफ अदर्स. तो आपको जो बैटिंग डेप्थ की प्रॉब्लम जो पहले हुआ करती थी गुड ओल्ड डेज में, वो अब आपको प्रॉब्लम नहीं है. आपको प्रॉब्लम है स्पिनर्स, आपको 1 खिलाना है या 2 खिलाना है. इन एनी ओवरसीज कंडीशन आई विल ऑलवेज गो फॉर 1. एंड लेकिन वहां पर भी अब जिस तरह की विकेट्स मिलती है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में भी कई विकेट्स, एडिट या गाबा की जिस तरह की विकेट्स मिलते हैं, हम 2 स्पिनर खिलाकर भी जीतते हैं. तो आपको प्रॉब्लम 2 स्पिनर के बिना आएगी. अगर आप अश्विन को या फॉर दैट मैटर आप 2 स्पिनर्स को बाकी एडजस्ट करेंगे, कुलदीप या रविंद्र जडेजा, दैट विल बी गुड फॉर द राइट हैंडेड बैट्समैन. लेफ्ट हैंडेड का आपके पास कोई सामान नहीं है ऐसा, अनलेस कुलदीप यादव 6 की 6 गूगली मारनी शुरू करते हैं. Okay, CS, thank you very much for your time. We'll leave it at that. And before we go, just a thought for you viewers, that here we are discussing about KL Rahul and Shreyas Iyer coming back from serious injuries, completely untested, no match exposure. And on the other hand, you have Ben Stokes, who has been parachuted into the England team for the ODI World Cup at the cost of Harry Brook. And Tim Payne, the former Aussie skipper, said, how can you do that? You can't bring in Ben Stokes just when he wants to play. Think about it. Have a nice evening and goodbye.